All praise is due to Almighty Allah, the creator of that exist. May peace and blessings of Allah be upon the leader, the chief of all messengers of God, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and those who follow him until the day of judgment. Most respected parents and my dear students, today we discuss Roman numbers. In this video, inshallah, we cover two topics. First, we try to cover Roman symbols, and second, rules to write Roman numerals. Roman symbols are 5. First Roman symbol is I. I represents 1. The second Roman symbol is V. English letter V. Students, do you know alphabet letters? I, capital I, and then V. V represents 5. Now third Roman symbol is X. Capital X. Capital X represents 10. The fourth symbol is L. Capital L. Capital L represents 50. Number 50. The fifth symbol is C. Capital C. C represents 100. So these are the symbols, Roman symbols. Roman numeral symbols are 5. First, capital I represents 1. Second, capital V represents 5. Third, capital X which represents 10. Fourth, capital L which represents 50. Fifth, capital C which represents 100. Now, we going to our second topic, rules to write Roman numerals. Students, repetition of Roman numerals means addition. एडिशन करते जाएंगे और हम आगे अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू करते जाएंगे. Remember which number is 1 in Roman? Single I. Single I, capital I. Single I is represents number 1. How can we write number 2? I plus I. Double I is represents number 2. Single I 1, double I 2. How can we write number 3 in Roman numbers? We write I plus I plus I. 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Triple I is number 3. Triple I represents number 3. Single I 1, double I 2, triple I 3. Okay. How can we write number 4 in Roman? Students must remember your second symbol 5. V represents 5. I minus V means 5 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4. IV 4. 1 before 5 is 4. Single I 1, double I 2, triple I 3, IV 4. Must remember IV, यहाँ पर I हमारा जो है वो V से पहले आएगा, यानी कि 5 से एक नंबर पहले 4. Now we write 5. Number 5 is
symbol V. Capital V stands for 5. Now, how can we write number 6? VI. 5 plus 1. 5 plus 1 is equal to VI 6. 7. As usual, we add 1. V plus double I. V double I 7. 8. V plus triple I 3. V triple I stands for 8. Now how can we write 9? As we write 4, same as we write 9. 1 before 10. 1 before 10 means IX, यानी कि 10 से बिल्कुल एक पहले. Now how can we write 10? Revise in your mind the symbol number 2, V, and the symbol number 3, X. X stands for 10. Now we write number 11. We write 10 plus 1. X, I, 11. Now we write 12. 10 plus 2. 10 plus 2, 12. X, double I, 12. 13. 10 plus 3 means X triple I. Capital X and capital I. X triple I 13. Now write 14. Number 14 is X plus 4. 4. IV stands for 4. X IV stands for 14. 15. X, capital X plus V. X, V stands for 15. 16. X plus VI 16. 10 plus 6 represents 16. X, VI 16. 17. 10 plus 7. X, V, double I represents 17. 18. 10 plus 8. V, triple I stands for 18. X, V, triple I stands for 18. 19. Now, remember, how can we write 9? 10 plus IX. 1 before 10. X, I, X. X, I, X represents 19. Now we write number 20. 10 plus 10. 10 plus 10 is equal to 20. Means double X. Double X represents 20. Now we write 30, 40. Triple X stands for 30. X, L means 10 before 50 is 40 and 50 L represents 50. Students, इसी एडिशन की तरतीब को फॉलो करते हुए आप लोग
20 से आगे 30, 40, 50 एंड ऑनवर्ड जहाँ तक आप चाहें आप काउंटिंग राइट कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको रोमन नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स और उसके सिंबल्स हर चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर अपने अच्छे कमेंट्स पास कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको समझ आई अच्छे से या नहीं। हमारी मजीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मस्ट शेयर कीजिए। पैराडाइज इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मजीद ऐसी मुफीद वीडियोज़ लेकर हाजिर होता रहेगा। थैंक्स फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफिज़।